Hello and welcome to Southwest. I'm Sumit Jha. In a recent development, the Medical Counseling Committee took an unexpected step just before the third round of NEET-PG exam counseling by lowering the qualifying percentile to zero. This surprising decision has led to widespread confusion, ignited passionate debates on various social media platforms, and even attracted political attention. Opinions on this matter vary. Some experts view it as a means for less academically exceptional students to secure admission in private medical colleges through management quota. Conversely, others defend the decision, asserting that it will help prevent medical colleges seats from going vacant. Today, we will delve into the zero percentile issue and explore its implication within the medical community. We are joined by esteemed doctor who represent association dedicated to safeguarding doctors' right within the institution and addressing healthcare system concerns in the country. I am pleased to introduce Dr. Lakshmi Mittal. He is the president of United Doctors Front Association, and Dr. Vanya Jasmine. She was the general secretary of Telangana Junior Doctors Association. Doctors, thank you for being here with us. So, Dr. Lakshmi, I'll start with you. What are your thoughts on MCC's decision to set the percentile at zero? It's a big victory and a boon to the medical fraternity. बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है जो कि गवर्नमेंट ने उठाया है। हेल्थ मिनिस्ट्री की तरफ से लेटर रिलीज हुआ कि 0 परसेंटाइल बहुत अच्छा मूव है ये गवर्नमेंट की तरफ से, हम रिकमेंड करते हैं। क्योंकि जैसे कि हमें पता है, अगर हम डेटा चेक करें, रिकॉर्ड चेक करें, तो अकॉर्डिंग टू दैट हमेशा ईच एंड एवरी ईयर देयर आर अ लॉट ऑफ थाउजेंड्स ऑफ सीट्स नॉन क्लिनिकल that remain vacant each and every year, because as government भी यही चाहती है कि seats vacant है जो fill हो जाए, और जो students जो interested हैं actual में non जो clinical branches हैं उनके लिए opt out करना चाहते हैं, जिनको चाहिए कि हम anatomy करें और उसमें अपना future देखें। because as a surgeon, जैसे मैं सर्जरी MS सर्जरी कर रहा हूँ, तो मुझे पता है कि एनाट की कितनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। दूसरी बात, एक रूमर्स जो फैल रहे हैं सब जगह कि ये प्राइवेट जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका सेल आउट कर देंगे और स्कैम चलेगा, देयर इज नथिंग ऑन एप। उनको मैं एक बात ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो जो सब लोग ये बोल रहे हैं इसको पॉलिटिकल एजेंडा बना दिया। एक्चुअल में इतनी ज्यादा इंटरनल पॉलिटिक्स चल रही है कि नीट की जो एस्पिरेंट्स है ना, दे आर जस्ट लिटरली क्राइंग। वो मतलब रो रहे हैं, फोन करते ही रो रहे हैं कि सर ये क्या हो गया। मतलब वो इसलिए नहीं रो रहे कि ये बुरा हो गया, वो इसलिए रो रहे हैं कि जो मेडिकल बॉडीज जो इतने सीनियर मोस्ट डॉक्टर्स भी हैं कुछ, वो ही हमें मतलब ऐसे बोल रहे हैं, हमें टॉर्चर मिल रहा है कि ये क्या डॉक्टर बनेंगे, ये कम करने वाले ये क्या क्या स्पेशलाइजेशन बनेंगे। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। वो प्रॉपर 19 सब्जेक्ट्स पास करके MBBS ग्रेजुएट्स हैं, उनको कोई जरूरत ही नहीं है। दूसरी बात ये है कि इतना कोई इसमें वो सिर्फ पार्टिसिपेट करने के लिए एलिजिबल हुए हैं। जो ये मिथ चल रहा है ना कि 0 मार्क्स वाला, माइनस मार्क्स वाला 20 बार स्पेशलिस्ट बनेगा, जो न्यूज की हेडलाइंस बनी हुई है, बट उनको ये तो पता होना चाहिए कि ये सिर्फ और सिर्फ पार्टिसिपेशन के लिए हुए हैं, होना सारा कुछ मेरिट से। MCC ने, मैं कहता हूँ गवर्नमेंट का बहुत सैल्यूट है, हैट्स ऑफ है गवर्नमेंट को, इतना प्यारा सिस्टम कर दिया है उनका। अगर आप पुराना रिकॉर्ड चेक करें, जो कॉलेज लेवल का राउंड होता था 4th राउंड, दैट इज प्रे राउंड, दैट इज ऑल्सो totally pura conducted by the government itself. Vanya, I have a question for you. Around 13,245 seats, mostly all India quota seats, were vacant before the third round of counseling. Do you see that there was a need for decreasing the percentile to zero? Sumit, thank you so much for giving me this opportunity to share my views on the channel. And first of all, if you ask me about the 0 percentile issue, I would say there are both pros and cons, and I would agree with most of the pros that have been stated by the former speaker. Reducing the percentile to 0 or whatever, by reducing the pass percentile, definitely those people will be able to get a chance to enter into PG degrees. But I would say there are cons also on this issue. That is my personal opinion. The cons, I would say, is it will actually reduce the quality of education, because if there is no competitive edge, definitely the quality of education will definitely go down.
speaking from my personal experience, when I was preparing for my PG entrance examination, I had to go through a rigorous sort of training because that entire 6 months I had to dedicate myself to prepare for this exam, and it had made me like while the preparation, the journey itself has made me ready for the upcoming PG days or residency days because doing residency in a government college requires a lot of mental strength and physical strength. And while preparing for this exam, I was able to build up myself to such an extent so that I will be able to go through the residency. And the other cons I would say is it will generalize, like it will mostly the management quota seats are filled in this way, so it is not of much use to the people who are from the government colleges. That is a major concern being stated by almost everyone. Like if we speak to most of the medical fraternity, like most of the people that I have spoken with, it need not be just only doctors, even the staff and the colleagues and the hospital workers, everyone have been stating the same fact that like if you see in 2023, like in PG, NEET 2023, now if the 0 percentile is included, that means the student should be getting minus 40 marks, right? So in order to get 0 percentile, he should be getting minus 40 marks in order to be qualified as 0 percentile. That means what sort of competitiveness will the doctor or the student have? Like no other exam has such a low cutoff percentage. Yeah, I'm definitely agreeing with the fact that the seats will be filled, but medical science is a science which includes the life of a patient in your hands. See, definitely you need a qualification, and not only that, you need that strength and perseverance, which you'll be getting while you will be having that competitive edge. Like if I compare myself, like I have worked in a government hospital and I have completed my entire residency in a government college. And if I compare myself with most of the people from private colleges, they are not much exposed to the harsh conditions of a government college, and so they definitely don't have that sort of perseverance and determination. That's what I feel. And if I compare to the people working in government colleges, they have to work in such low income conditions, and sometimes the materials are not available. But even then, they have to attend to the patients, and it definitely gives you a lot of strength and perseverance. That's what I feel. So, Dr. Laksh, You'll be here getting a it's a question of merit and the quality of medical education. Do you want to speak about that? So she said कि जो इनका कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो दे के आ रहे हैं, तो उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने बहुत, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, बिल्कुल मेहनत की है, सबने की है, बट एक तरह से ये देखा जाए तो ये जेलस फैक्टर हुआ ना, ये तो कि वो बच्चा कैसे मेरे बराबर आके कुछ कर सकता है या कुछ भी। पहली बात तो ये मिथ है कि दे आर जस्ट अलाउड टू पार्टिसिपेट इन द काउंसलिंग। वो कोई सीट ले नहीं गए हैं अभी, उनको सिर्फ पार्टिसिपेट करने का मौका दिया है। दूसरी बात, जो नॉन क्लिनिकल पीजी सीट्स होती हैं, उनको कोई भी वो नहीं कहता, उन्हें कोई पेशेंट पे वर्क नहीं करना है, किसी पेशेंट पे दे आर सेइंग कि पेशेंट की सर्जिकल नहीं करना है उनको कुछ भी। जिनको नॉन क्लिनिकल पीजी सीट लेनी है, दे आर जस्ट, दे वांट कि हम नॉन क्लिनिकल पीजी सीट लें अपनी। अब जैसे मेरे एक सीनियर, मैं एग्जांपल देता हूं, वो पिछले 4 सालों से ट्राई कर रहे हैं, उनके पास टाइम नहीं। और सबसे बड़ी बात, आप इस एक एग्जाम के बेस पे आप उनकी वो कंडीशन चेक कर ही नहीं सकते हो कि वो एक डॉक्टर अच्छे नहीं है या कुछ। उन्होंने एमबीबीएस पास की है, ये तो आप इसका मतलब पूरी मेडिकल एजुकेशन पे, पूरी एमबीबीएस पे मतलब एक तरह से क्वेश्चन पुट अप कर रहे हो। ये कोई लॉजिक ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने एग्जाम दिया है, पूरे सारे 19 सब्जेक्ट्स पास किए हैं, उसके बाद वो नीट पीजी के लिए अपीयर हो रहे हैं। ये आप कैसे कमेंट कर सकते हो कि उन्होंने कंपटीशन नहीं दिया, उन्होंने अगर ये स्कोर कम किया है तो वो बेकार डॉक्टर्स हैं? हाँ, दिस इज टोटली रॉन्ग। आई एम टोटली डिसएग्री विद दिस पॉइंट कि आप एक सिंगल एक एग्जाम से, उस 3-3.5 घंटे का एग्जाम होता है ये नीट पीजी, ठीक है। मैं खुद नीट पीजी दे के आया हूं, तो मेरे को सब पता है कि क्या प्रिपरेशन है, सब चीज है। मैं मानता हूं, एक्सेप्ट करता हूं कि एक कंपटीशन वाली, पर ये कंपटीशन की भावना है, ये जो जेलस फैक्टर है ना, ये आपको गलत फैला रहा है। बाकी इसका कोई एक भी मुझे बता दो कि इसका नुकसान है कहीं पे, नुकसान इसका है ही नहीं। दूसरी बात जो ये कह रहे हैं कि
इसमें गवर्नमेंट वाले लोगों को फायदा नहीं होगा, प्राइवेट वाले को क्या फायदा होगा? हमेशा पिछले 7 सालों से देख लो, रिवाइज कट ऑफ कम हो रही है। प्राइवेट वाले तो अपनी सीट वो तो वैसे की वैसे ही पड़ी है उनकी, वो तो जिसको लेनी है वो लेगा ही। बल्कि मैं एक चीज और साफ कर दूं आपको कि इसमें एक पॉइंट और अच्छा हुआ है, दैट इज कि जो बच्चे बेचारे जिनको नॉन क्लिनिकल, जो इतने सालों से जो काम कर रहे हैं, डॉक्टर्स हैं जो पेरिफेरी में, वो बेचारे लगे हुए हैं कि हम अपना काम करें और अपनी जगह पे आके वापस चुपचाप अपना सेटल हो जाएं। हमें अपने गांव में सेवाएं देनी है, अपने विलेज लेवल पे वर्क करना है, पीएचसी लेवल पे, पेरिफेरी हेल्थ सेंटर्स पे। तो उनका तो बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड है कि हम अपनी सीट लेंगे, एमडीएमएस करेंगे और अपना प्रैक्टिस वापस जाके करेंगे। So, Laksh, I have a question here then. So, these doctors who are working in now that government has allowed the 0 percentile and the counseling will be for everyone who has given the NEET-PG exam. Will these non-clinical branches doctors like biochemistry or microbiology or as you mentioned forensic science, they will move from tertiary center to primary centers as you mentioned? Will there be any process of them going back to their origin? हाँ, क्यों, प्रोसेस है ना। आप देखिए पेरिफेरी सेंटर्स पे एमएलसी नाम की चीज होती है, मेडिको लीगल केसेस। वो Hmm. कौन करता है? उसका एक्सपर्ट उसका कौन है? दे आर फोरेंसिक मेडिसिन एजुकेशन, जो कि फोरेंसिक मेडिसिन एफएमटी जो सब्जेक्ट है, सेकंड ईयर का था, अब एनएमसी ने उसको थर्ड ईयर में कर दिया, थर्ड प्रोफ एमबीबीएस में कर दिया है। उसकी इंपॉर्टेंस सिर्फ और सिर्फ मेडिकल कॉलेजेस में ही दिखाई दे रही है कि वो प्रोफेसर हैं। जो पेरिफेरी लेवल के डॉक्टर्स हैं, मैं खुद एमओ रहा हूँ, मेडिकल ऑफिसर, मैंने गवर्नमेंट में जॉब की है, मुझे नहीं ज्ञान होता था, मुझे खुद को नहीं पता होता था कि मेडिको लीगल इतना बड़ा इशू बन सकता है। ये कोई इंजरी का केस, ट्रॉमा का केस आया, वो सर्जरी कर रहा है, इसका मतलब अकेला सर्जन इन्वॉल्व नहीं है किसी भी पार्ट में। तो वो उसका मुझे मुझे हमेशा मेरे फोरेंसिक एक्सपर्ट से, जो मेरे प्रोफेसर थे, मैं उनसे कॉल करके पूछता था कि सर प्लीज हेल्प मी आउट, मैं यहाँ पे इस चीज में मेडिको लीगली ये चीज में फंस रहा हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, प्लीज सजेस्ट योर ओपिनियन। तो अगर वो लोग अपने गो बैक टू देयर पेरिफेरीज जाएंगे और वहां प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत बेटर हो जाएगा। जो एजुकेशन लेवल का जो स्तर है ना, ये इम्प्रूव होगा। Vanya, I have this question for you. So, what measures or safeguards do you believe should be in the place to ensure that only students with the necessary skills and qualification enter the medical profession? The thing is, as sir has been implying that if the service candidates are able to get a PG seat, definitely they will go back to their PhD center and a specialist post will be created and then they will be working there. That is not necessarily true because it only completely depends upon the choice of a doctor. Getting a PG seat might be a criteria for him to get a better salary, but that doesn't ensure anyone that he's going back to his hometown and is going to join as a PhD, as a part of the PhD doctors. That is not true completely because I've seen most of the people who have completed their service for almost 5 years. And if you see in the NEET PG counseling, there will be a separate service quota, which is higher. Like the reservation for them is completely higher because of their age and also because of the service that they have provided in the lower PhD centers. So definitely they are given reservation. So when these people, when they write the NEET-PG exam, they are in the hope to just only get a higher qualification, that is just only PG. So when I have some of my service PGs who have completed the service and then they've joined the PG along with me, and if I compare and if I ask about their viewpoints regarding whether why they have done their service, and none of them, and most of the people that I have spoken with, none of them have given a definite answer that they will be going back to their hometown and to their PhDs just again to join as a service specialist over there. So implying that getting a PG seat will make will create a better opportunities. Like if the people, if they're given a PG seat, that doesn't imply they'll go back to their hometown and serve there. So that is not a mandatory thing. मैंडेटरी नहीं That है is मैम, what बट जो लोग करना चाहते हैं तो उनके लिए तो बहुत अच्छी चीज है ना। मैं ये नहीं कह रहा कि 100% वो करेंगे। definitely, मुझे एक definitely बात I would बताओ agree मैम, on that. इसका कोई नेगेटिव इशू नहीं है ना मैम, ये सारा प्रोज में जा रहा है। आप एक चीज देखिए, अगर 100% का
10% लोग भी, मैं तो ये कह रहा हूँ कि जाके अपने जो पीएचसी लेवल को बेटर कर रहे हैं, तो वो कितना बेटर है। जो गांव के लोग हैं, जो पेरिफेरी से बिलोंग करते हैं, उनका मेडिकल एजुकेशन लेवल ऊंचा हुआ कि नीचा हुआ, ये बताओ मुझे तो बस। बेटर हुआ कि पुअर Sir, हुआ, it is इसका not रिप्लाई दो मैम, आप mandatory. सिर्फ नहीं, मुझे सिर्फ sir, it इसका is रिप्लाई not दो। मैंडेटरी नहीं mandatory. बोल रहा मैम, मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि ये मोस्ट जो मेरे, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके कॉन्टेक्स्ट में लोग थे, आप उन्होंने ये चीज बोली, बट मैं उनकी बात, मैं इसमें से ये चीज कह रहा हूँ कि हर जगह हर इंसान में सारी था, अब जैसे हर हर चारों पांचों उंगलियां मेरी एक साथ की नहीं है, सारी अलग अलग है ना। तो उसी टाइप से सेम चीज है कि सब लोग एक जैसे नहीं होते, सबकी सोच एक जैसी नहीं है कि मुझे जाके वो करना है, सबका कुछ, हर जगह डिफॉल्टर है, मेडिकल फील्ड में भी डिफॉल्टर है। And definitely regarding the 0 percentile, I would still say it kills the competitive edge because as I'm mentioning, 0 percentile means minus 40 marks. See, no other exam in entire India has such a low mark in order to pass and enter into the counseling. So if people are just only attempting the exam and even just getting minus 40 marks, and if they're able to get a specialist doctor, they won't be that much competitive. See, like when the patient's life is given into your hands, and if you don't have that competitiveness to do the better of all the opportunities that are being given to you, definitely, ultimately, right now, it will serve certain sections of people, but later on in the long run, if we compare our medical system to the medical system of the other countries, like the quality of education will definitely go down. Now Indian doctors are right now in great demand because of the high level of quality education that is being provided in most of the central institutes and all the government colleges in India. But if the same level of education system is going to continue, especially in the healthcare system, definitely doctors are not going to be top notch as of right now. Like if this system goes on, people are not मैम going to मैं be that आपको much 1 मिनट competitive इसके अंदर ये and चीज they are बता दूं, not जो going to be आपने बोला है compared. ना मैम, जो आपने बोला है कि मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट एंड सेंट्रल जो इंस्टीट्यूट्स हैं, दे आर प्रोवाइडिंग मेडिकल एजुकेशन बहुत अच्छी। तो मैं एक चीज क्लियर कर दूं मैम, उनमें आप एक बार सर्वे करके एक बार चेक कीजिए रिकॉर्ड्स, जो मैंने पहले भी मेंशन किया था, जो नॉन क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं ना, फर्स्ट ईयर सेकंड प्रॉफ के जो एमबीबीएस के सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी, फिजियो, बायोकेमिस्ट्री, इनके प्रोफेसर्स अवेलेबल ही नहीं है। 30% कॉलेजेस ऐसे हैं गवर्नमेंट Can you जिनमें name सीट्स some वैकेंट colleges? पड़ी हैं। आप Let's आके चेक, आप देखिए, आप खुद गूगल कीजिए। राजस्थान में ही, मैं आपको और दूसरी स्टेट की नहीं बता रहा, राजस्थान में हर डिस्ट्रिक्ट में अब नई प्रावधान चला है, यूपी में, राजस्थान Sir, में, it हर डिस्ट्रिक्ट completely में। depends upon the choice of the individual whether they want to take a non-clinical seat or a clinical seat, sir. मैम मैं So आपको if ये the बोलना चाह रहा हूँ if कि the no, it होगा तो doesn't मेरिट से ना, होगा zero तो मेरिट से। percentile. No, yeah, it depends on the merit आप एक only. बात But बताइए, जो converting it to कॉम्पिटिटिव एग्जाम से, completely आप to a कॉम्पिटिटिव minus बोल रहे हैं, 40 marks definitely is not जरूरी तो, like people are qualifying, but they're still opting for non-clinical seats. That doesn't mean that lowering it to हाँ, 0 percentile makes more and more non-clinical seats available. That is not a mandatory thing. That is what I'm trying to that's imply. just It because is that's completely just the choice of government the implied student. this, just because, No. It is just उन्होंने completely the इसलिए choice of इम्प्लाई the किया student. गवर्नमेंट Now the ने government is कि telling. ताकि जो हमेशा से पिछला जो रिकॉर्ड है, मैम हमेशा रिकॉर्ड वर्क ही चलता है ना गवर्नमेंट, उन्होंने पहले प्रैक्टिकली कभी इम्प्लाई तो किया नहीं है। तो हमेशा जो सीट्स वैकेंट जा रही हैं, तो गवर्नमेंट ट्राइड देयर बेस्ट एट देयर पार्ट, गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया है कि ये फिल हो वैकेंट सीट्स, ऐसे नहीं तो ऐसे हो, इस तरीके से हो, ताकि जो नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, यूपी में, राजस्थान में, नॉर्दर्न पार्ट में, आप देखोगे हर डिस्ट्रिक्ट में नया मेडिकल कॉलेज खुल रहा है और वहां पे Why are कोई there being new टीचर्स medical अवेलेबल colleges नहीं being है। constructed when the older ones are not yet being developed, sir? Right now, if you speak in my state, Telangana, there are 8 new medical colleges that have been constructed, but the older medical colleges don't receive the necessary attention that needs to be provided, right? See, right now in Telangana, if you state, like my state is Telangana, and I'm speaking on behalf of Telangana, like if you see in particular state, Gandhi and Usmania are the topmost hospitals. There are no necessary infrastructure and top class infrastructure that is being provided. And why is new medical colleges being constructed? I don't understand. Why do you need to construct a new medical colleges when you don't want to develop an already existing well established old medical college? And why do you want to create new posts in the worst instance? Why do you want to create a new post?
Thank you, Laksh, and thank you, Anya, for your time. Thank you for watching South First.